माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, बैठ जाइए। माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकृति नहीं दी है। जी, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र, आइटम नंबर 2, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। ऑनरेबल चेयरपर्सन सर, मैं आपकी अनुमति से लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 2 पर अंकित दस्तावेज जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से संबंधित हैं, जो मेरे नाम के आगे अंकित हैं, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 3, श्री श्रीपाद यसो नाइक जी। Lay on the table of the House the paper mentioned against my name at serial number 3 in today's revised list of business. आइटम नंबर 4, डॉक्टर मुंजुपरा महेंद्र भाई। Honorable Speaker, sir, with your kind permissions, I wish to lay on the table of the House papers mentioned serial number 4 against my name in today's revised list of business. Thank you, sir. आइटम नंबर 5, महासचिव जी। Sir, I have to report that 1, Rajya Sabha at its sitting held on the 2nd August 2023 agreed without any amendment to the Forest Conservation Amendment Bill 2023 and the Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2023 as passed by Lok Sabha. 2, Rajya Sabha at its sitting held on the 3rd August 2023 agreed without any amendment to the Offshore Areas Mineral Development and Regulation Amendment Bill 2023. 3, Rajya Sabha at its sitting held on 3rd August 2023 passed the Press and Registration of Periodicals Bill 2023 and the Advocates Amendment Bill 2023. Sir, I lay on the table the Press and Registration of Periodicals Bill 2023 and the Advocates Amendment Bill 2023 as passed by Rajya Sabha on 3rd August 2023. जयेश वर्मा जी। With your kind permission, I rise to present a copy, each in Hindi and English versions, of the 22nd, 23rd, 24th and 25th report of the Committee on Welfare of Other Backward Classes as listed against my name in today's list of business. Thank you. नंबर 7, श्री जोएल ओराव जी। श्री जोएल ओराव जी। श्री अन्ना साहेब शंकर जौले जी। Thank you, sir. Sir, I rise to lay a copy each of final action taken statements, Hindi and English versions of the government on the recommendations contained in Chapter 1 and 5 of the 9th, 10th, 11th, 12th, 14th, 15th, 17th, 18th, 23rd, 24th, 25th and 30th report in 17th Lok Sabha of the Standing Committee on Defence as listed against my name in today's list of business. Thank you, sir. नंबर 8, श्री पीपी चौधरी जी। Sir, with your kind permission, I wish to lay on the table the statement Hindi and English version showing action taken by the government on the observations, recommendations contained in the 21st report of the Committee on External Affairs, 17th Lok Sabha, on action taken by the government on the observations, recommendation contained in the 15th report on the subject, welfare of the Indian diaspora, police scheme listed against my name at serial number 8 in today's order paper. श्री सतीश कुमार गौतम जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के सामने क्रम संख्या 9 पर यथा सूचीबद्ध श्रम, भ्रष्ट और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति का 49वां और 5वां प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी में संस्करण प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 10, श्री कृष्णपाल यादव जी। With your kind permission, I beg to lay on the table the following reports, Hindi and English version of the Standing Committee on Health and Family Welfare.
146 report on the action taken by the government on the recommendations, observations contained in 138th report of the Committee on Medical Device Regulation and Control, 147th report on the action taken by the government on the recommendations, observation contained in the 139th report on the Committee on Cancer Care Plan and Management, Prevention, Diagnosis, Research and Affordability of the Cancer Treatment, and 148th report on mental health care and its management in contemporary times. Thank you. Item number 11, Shri Suresh Kumar Pujari ji. Honorable President, sir, with your kind permission, I beg to lay on the table the 132nd report, both in English and Hindi version, of the Standing Committee on Personal Public Grievance, Law and Justice on the subject specific aspect of election process and their reform. Thank you, sir. अजय भट्ट जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख अंकित रक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2022-23 सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तटरक्षक, रक्षा संपदा संगठन, रक्षा सार्वजनिक उपक्रम, कैंटीन स्टोर विभाग, पूर्व सैनिकों का कल्याण और रक्षा पेंशन मांग संख्या 19 और 22 के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 26वें प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति का विवरण हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण में सभा पटल पर रखता हूं। नंबर 13, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson, sir, with your permission, I want to make a statement regarding the government business for the remaining part of the session. हाउस ऑर्डर में नहीं है, इसलिए मैं ले करता हूं सर, ले कर देता हूं। थैंक यू।